chapter life process, transportation in human beings. Transportation in human beings. Let's start the topic. The main thing from where we start the chapter, from where we start the chapter is blood. Okay, let's come to the topic. What is blood? Blood होता क्या है? Blood होता क्या है? What is blood? The things we are seeing that the red pigment, even when we have cut, when there is any cut in our hand or somewhere else, we say there is some red fluid type things coming out from the body. Okay, we simply say that it is a blood. We simply say that it's a blood. Okay, but what actually blood is? But actually में blood होता क्या है? But what actually blood is? If there is any cut, we see any cut and we are seeing that something red fluid is coming out of our body, we say that this is blood. Okay, but what actually blood means? Let's start the topic from this thing, that is blood. The study of blood is called hematology. First of all, the study of blood, before starting the topic, let's come to a terminology that what the study of blood is known as. Okay, so the study of blood is called hematology. Right? Blood has four components. Blood has four components, that is plasma, RBC, WBC and platelets. Is it clear to all of you? Blood has four components, that is plasma, RBC, WBC and platelets. First, start with RBC. The most widely used terminology in the medical field, that is RBC, platelets, WBC and plasma. But let's start with the term RBC. What is RBC? What is the full form of it? That is red blood corpuscles, or we can also say that red blood cells. कितने अमाउंट में प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में? राइट, 5.5 million per cubic meter square. Okay, 5.5 million per cubic meter square. Okay, it is the most abundant. Just look at the value कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू को देखिए. 5.5 million per cubic meter square. Right. And what is the value of WBC? That is 6,000 to 8,000 per cubic meter square. And platelets in lakhs. 1.5 to 3.5 into a million. Right? It is the most abundant. It is the most abundant and its formation in bone marrow. इसका इस लाइन का क्या मतलब है? RBC का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? RBC का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? RBC का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे रेड बोन मैरो में. ओके, इन द एडल्ट फेज, about the bone marrow on something that blood is where the blood formation is going on. When we are reading the reproduction chapter or something hematology related things in class 11, we will further discuss the topic in that class. But here we are just only seeing that where the formation of blood takes place. Okay, in adult, where the formation of blood takes place. So blood का formation basically bone marrow में होता है. Blood का formation basically bone marrow में होता है. Red blood cell, that is red blood corpuscles होते हैं. Most abundant होता है. Okay, कितना वैल्यू है? 5 to 5.5 million per cubic meter square होता है. इसका शेप होता है राउंड बाइकनकेव. Okay, round and biconcave जो circular होता है, that is when we see a coin. एक कॉइन को लेना है और उसको हल्का सा प्रेस आउट करना है, दैट इज प्रेस आउट. एक डिस्क साइड बनाना है, थोड़ा सा उसको प्रेस आउट करना है, वो सर्कुलर टाइप दिखेगा. दैट इज रेड ब्लड सेल जो बाइकनकेव होता है, डिस्क शेप होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है. राइट, नाउ कम टू द पॉइंट दैट इट कंटेन्स हेमोग्लोबिक पिगमेंट, दैट इज हेमोग्लोबिन. रेड पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेड पिगमेंट होता है एंड आयरन कंटेनिंग है. व्हाट इज हेमोग्लोबिन? नाउ कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन होता क्या है? हेमोग्लोबिन को जनरली हम HB लिखते हैं, बट ये होता क्या है?
What is hemoglobin? So come to the point. What hemoglobin is? It's a red pigment. It contains and why it is red? Blood. Why blood is red? Why blood is red? Because it contains hemoglobin pigment. ठीक है? Hemoglobin pigment, which is iron containing pigment. Okay. Now the next topic is life is the next point is the life span of RBC. अगर हमारे बॉडी में RBC बन रहा है, ब्लड बन रहा है, जो कि बोन मैरो में बन रहा है, वो एक बार एक सर्टेन पीरियड के बाद वो जाके रिन्यू हो जाता है. तो वो रिन्यू होने का जो वो सर्टेन पीरियड है, वो जो टाइम है, वो 120 डेज का होता है. ठीक है, 120 डेज का उसका रिन्यूअल टाइम होता है कि जब ब्लड हमारे बोन मैरो में बन रहा होता है, उसके 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद वो रिन्यू होता है. ओके, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद वो रिन्यू होता है. ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं. जो 3 महीने के बाद हमारा वापस से ब्लड बन रहा है, तो पहले वाला ब्लड कहाँ गया? वेयर दैट द प्रीवियस ब्लड गोस. ओके, वो प्रीवियस वाला ब्लड कहाँ चला गया? दैट इज इन द स्प्लीन. वो कहाँ गया? स्प्लीन में. स्प्लीन, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं. ग्रेवयार्ड मतलब जो जहां पे दफनाया जाता है, दैट इज द समथिंग. तो स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ऑल्सो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस लाइक O2 एंड CO2 को. ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस जैसे O2 और CO2. वी हैव सो मेनी टाइम्स discussed, even when you are in class 7th, you have already read the topic of transportation and respiration earlier. So basically, before explaining the thing that it transport O2 and CO2, the main thing is the respiration. How can we say that blood or RBC, blood का component है RBC? We are saying that blood का component है RBC, और seriously blood हमारा O2, CO2, hormones, ions, everything is transported, even the waste material, and the CO2 is the waste material. Okay, CO2 एक waste material है, right? How we transport it? How blood से ये transportation हो रहा है. We always consider कि blood में ये सारे transportation हो रहे हैं. Blood O2, CO2, hormones, ions, everything, ये सब चीजों को transport करता है, right? तो ये CO2 आया कहाँ से? Blood इसको transport करता है. How can we say that? Let's revise the small topic about the respiration what we have studied in class 7. That is O2 and CO2. Blood इसको कैसे transport करता है? How blood transport O2 and CO2? So we have studied in class 7 that respiration. Respiration that is a mechanism है. Respiration का एक mechanism होता है जिसमें क्या होता है? ब्लड रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है O2 के प्रेजेंस में और एनर्जी प्रोवाइड करता है सम वाटर व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सेल एंड आल्सो CO2. CO2 is the waste product of our body which have to be excrete out from our body. Okay, तो रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि ब्लड जो होता है, let me add one thing. Okay, if this is lungs, right? यहाँ पर से these are alveoli. These are alveoli. Okay, this is lungs. ट्रैकिया को इसको क्या कहेंगे? That is known as what this is known as? This is bronchiole. Further, it is divided into the primary, secondary, and tertiary bronchiole, and then it is divided into the alveoli. Okay, here are some blood vessels which carry blood. Okay, यहाँ पे blood जो हो रहा है ये blood को carry कर रहा है और blood में यहाँ पे CO2 है.
और हमारे एल्वियोलाई के पास प्रेजेंट है O2। ब्लड में हमारे CO2 प्रेजेंट है एंड एल्वियोलाई के पास O2 प्रेजेंट है। ब्लड इसको CO2 दे देता है एंड एक्सचेंज में ब्लड के पास आता है O2। ब्लड के पास O2 आता है। तो इस लाइन के कहने का ये मतलब था, द बेसिक ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक O2 and CO2। तो फ्रॉम वेयर दिस O2 and CO2 कम इन ब्लड में ये O2 और CO2 आया कहां से? आई एम सॉरी, ब्लड में ये O2 and CO2 आया कहां से? ये CO2 जो आया तो दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से आया। रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से ये CO2 आया। these are the by products। in fact we can say that the waste product। इसको हम लोग बोलते हैं waste product which have to be excrete out from our body। जिसको हमारे बॉडी से excrete out होना जरूरी है, क्योंकि अगर CO2 का अमाउंट हमारे बॉडी में इंक्रीज कर जाता है तो इट लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। इंसान का डेथ हो सकता है। So it's a waste product, it has to be excreted out। So here the only purpose to explain all these process of respiration is from where the CO2 and O2 comes, and how can we say that blood transport O2 and CO2। These are the basic things, okay, why we are saying that ki blood transport O2 and CO2। Is it clear to all of you? Now come to the point, it's clear। RBC is finished here। Here are some important points of RBC। You have to if you want to mention in your notebook you can mention it। Now come to the point WBC। What is WBC? WBC is white blood cells या white blood corpuscles, right। इसका अमाउंट हमारे ब्लड में कितना होता है? 6000 to 8000 क्यूबिक पर मीटर स्क्वायर। इसका अमाउंट हमारे बॉडी में कितना होता है? दैट इज 6000 to 8000 पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर। ओके, ये कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस। हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट। इसमें हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई इट्स कलरलेस। हेमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट। ये रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है ब्लड को, जो कि आरबीसी में नहीं पाया जाता है, जो कि डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है। आई एम वेरी सॉरी, आरबीसी में पाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस। शॉर्ट लिव्ड होता है जनरली। हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बनते रहते हैं। ये आगे इसके मैकेनिज्म को क्लास 11th में या 12th में पढ़ना होगा। इसके आगे मैकेनिज्म है क्या, व्हाट इज लिम्फोसाइट एंड व्हाट ऑल दैट डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हियर वी आर जस्ट सेइंग दैट कि लेस इन नंबर होता है, दिस इज लेस इन नंबर, ऑफ कोर्स इट इज इन थाउजेंड्स, लाइक 6000 to 8000 पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर। एंड फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन मींस बीमारी से लड़ता है, हमारे बॉडी को बीमारी से लड़ने का क्षमता प्रोवाइड करता है। दैट इज WBC व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? व्हाट इज प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का नंबर होता है 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर। रिलीज सर्टेन फैक्टर्स। व्हाट दैट सर्टेन फैक्टर्स इज? वो सर्टेन फैक्टर होता क्या है? वो सर्टेन फैक्टर क्या होता है? वो सर्टेन फैक्टर इज समथिंग, कैल्शियम उसमें से एक आता है जो कैस्केड सिस्टम प्रोवाइड करता है। Here I haven't written the cascade system because in class 10th you are not going to study about the cascade system, right? So 1.5 to 3.5 lakh per cubic meter square होता है। Release certain factors, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करता है, जैसे कैल्शियम हो गया। वो पूरा एक कैस्केड सिस्टम बना लेता है, जो कि क्लोथिंग फैक्टर के लिए, जो कि क्लोथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये इनिशिएट करता है क्लोथिंग को, अगर कभी कोई भी वुंड हो गया या फिर कहीं पे कट गया, इफ देयर इज एनी कट, ब्लड आता है बट वो खुद ब खुद वो सर्टेन टाइम के बाद रुक जाता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? दैट इज द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ब्लड में प्लेटलेट्स होता है जिसमें क्लोथिंग फैक्टर है, दैट इज कैल्शियम, जो पूरा कैस्केड सिस्टम बना रहा है। ओके, तो वो जैसे ही ब्लड आने लगता है उसको क्लोथ करना स्टार्ट करता है तो रुक जाता है। अब क्या होगा अगर प्लेटलेट्स काउंट कम जाएगा? अगर प्लेटलेट्स काउंट कम जाएगा तो इन द फर्दर लेक्चर्स वी विल स्टडीड अबाउट दैट कि इफ अगर प्लेटलेट्स काउंट कम जाएगा तो फिर क्या होगा? क्लोथिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर कटा हाथ तो फिर जल्दी से वो क्लोथ नहीं हो पाएगा, क्लोथिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर लाइक हेरिडिटरी वी विल स्टडी अबाउट द हीमोफीलिया। हेमोफीलिया में क्या होता है? उसमें एक क्लोथिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें कि प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, इस वजह से जो कटा हुआ होता है ब्लड रुक नहीं पाता है वहां से। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से दैट अगर प्लेटलेट्स अगर ब्लड में कम हो जाएगा
तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है। प्लेटलेट्स का काउंट अगर डिक्रीज करता है तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर भी आगे जाकर हो सकता है। दैट इज द थिंग्स। और अगर क्लोथिंग डिसऑर्डर है, क्लोथिंग डिसऑर्डर का मतलब ही लिखा हुआ है एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी। क्लोथिंग डिसऑर्डर मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। जो भी अगर कहीं पे कट गया, इफ देयर इज एनी कट, तो जितना ब्लड आना चाहिए नॉर्मली और वो क्लोथ हो जाता है, ज्यादा ब्लड आता है, which may lead to the death of a person. Platelets count, right? Now come to the point, plasma. What is plasma? It's a fluid matrix. It's a fluid matrix, थोड़ा चिपचिपा टाइप होता है। It's a fluid matrix, थोड़ा चिपचिपा टाइप होता है। 55% होता है ब्लड में, इसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में 55% है। स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर मींस लाइट येलोइश होता है, लाइट येलोइश होता है। विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस इट मींस चिपचिपा। विस्कस फ्लूइड होता है। 90 to 92% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साइंस होता है, लाइक मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। हियर सोडियम एंड पोटेशियम वी विल रीड अबाउट न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं, जो इम्पल्स जनरेट करते हैं, फ्रॉम वेयर द इम्पल्स जनरेशन टेक्स प्लेस, वहां पर ये सोडियम और पोटेशियम पंप जनरेट होता है। ये भी हमारा प्लाज्मा कैरी आउट करता है। प्लाज्मा also carry these types of ions, also hormones, gases like O2 and CO2 as like RBC, ट्रांसपोर्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में, जो ब्लड में हम बोलते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, उसको एब्जॉर्ब करता है प्लाज्मा। अमाइनो एसिड्स, सम लिपिड्स। ब्लड क्लोथिंग फैक्टर इसमें इनएक्टिव होता है। ब्लड क्लोथिंग फैक्टर एक्टिव किसमें होता है? प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ओनली प्लाज्मा अगर हम किसी का लेते हैं, किसी का भी सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा लेते हैं, तो उसमें ब्लड क्लोथिंग फैक्टर नहीं आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Blood regulates the body temperature. This is because the blood capillaries in our skin help to keep our body temperature at about 37 degrees Celsius. ब्लड जो है वो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, दैट इज नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ओके, उस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कैसे? हाउ कैन वी सी दैट? जो ब्लड का कैपिलरीज होता है, दैट इज ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो स्किन से कनेक्टेड, स्किन से ब्लड होता है, राइट। और इन आवर स्किन हेल्प्स टू कीप द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। Wait a second. Okay. सही है सर, further we will blood regulates body temperature. This is because the blood capillaries in our skin helps to keep our body temperature is about 37 degree Celsius. इस लाइन के बारे में आगे पता चलेगा। Why we are saying that blood capillaries in our skin help to keep our body temperature about 37 degree Celsius. Okay. Human circulatory system. Now come to the point.
Now come to the next topic of this chapter, that is human circulatory system. Human circulatory system consists of heart and blood vessels. That is the pumping organ which pumps and receives blood. Generally, we can say that heart is a pumping organ of our body. Generally, we can see that heart is a pumping organ of our body. Also, next, let's come on the point. Our human circulatory system consists of heart and blood vessels. If heart pumps the blood, where blood comes and goes to the certain body parts. Okay, blood vessels. Blood. What is blood vessels? It's a tube through which the blood flows in the body. Blood vessels होता क्या है? ब्लड वेसल्स होता क्या है? एक ट्यूब, जिसको एक ट्यूब कह सकते हैं, through which blood vessels or tubes through which the blood flows in our body. If heart is a pumping organ, heart blood को पंप करता है with pressure और रिसीव करता है, ब्लड को रिसीव कर रहा है, पंप कर रहा है, किसके थ्रू रिसीव कर रहा है और पंप कर रहा है, तो कैसे वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन और पूरे बॉडी में हमारी ब्लड कैसे जा रहा है. Right, now come to the point that what is blood vessels. It's a tube through which blood flows in the body. Blood vessels, these are the tubes through which blood flows in our body. It is of three types, that is arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. Next, let's come on the what are arteries, veins and capillaries. Arteries होता क्या है, veins क्या होता है और capillaries क्या होता है. Come on the points. Arteries जो होता है वो thick walled blood vessel है. Arteries are thick walled blood vessels which carry blood from the heart to all the parts of body. Arteries जो होता है, this topic can be explained through this diagram. Wait. This is some diagrams. Artery, vein, artery and vein. Okay, first of all, let's come to the point. Arteries have thick walled blood vessels which carry blood from heart to all the parts of the body. Arteries जो है वो thick walled होता है, thick walled blood vessel होता है जो कि heart से blood को, जब heart blood को pump करता है तो artery oxygenated blood, the main thing is oxygenated blood को heart से different parts of the body में लेकर के जाता है, heart से different parts of the body में लेकर के जाता है. And what is thick wall? The question is arteries have thick wall blood, arteries have thick wall blood vessels which carry oxygen from heart to all the parts of the body. Why it is thick wall? To tackle the high pressure of blood emerges from the heart. Arteries thick wall इसीलिए होता है because जब भी हमारे heart से pump होता है blood by left ventricle तो काफी प्रेशर के साथ पंप होता है. जब भी ब्लड पंप होता है तो काफी प्रेशर के साथ पंप होता है जिसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. जब बीपी को हम मेजर करते हैं तो सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं. सिस्टोल एंड डायस्टोल, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं. तो जो वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप, वेंट्रिकल्स बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है, तो आर्टरी ही है, आर्टरी दैट इज एओर्टा which is the largest artery and the main artery in our body. वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेकर के जाता है. तो अगर आर्टरी का वॉल अगर थिक नहीं होता है तो व्हाट विल हैपन? इट विल बर्स्ट आउट. इफ arteries walls are not thick, then what will happen? It will burst out. So that's the reason behind it कि why arteries have thick wall blood, why arteries are known as thick wall blood vessels. ऐसा क्यों कहते हैं कि मतलब क्यों arteries का जो wall है वो thick होता है? इसके नीचे का, इसके पीछे का यही कारण है to tackle the high pressure of blood emerges from the heart. heart से जो high pressure में blood जा रहा है, जब भी blood generate हो रहा है तो systolic pressure, उस प्रेशर को टैकल करने के लिए उसका वॉल थिक होना चाहिए, नहीं तो वो बर्स्ट आउट हो जाएगा. नाउ कम टू द वेन्स. और इसका एक कम से वेन, ये थिन वॉल्ड होता है.
thin walled blood vessel which carry deoxygenated blood from body to all the parts of the body to the heart. वेन्स जो है पार्ट ऑफ द बॉडी से और वो हार्ट में दैट इज द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट. Right, blood flows through them is no longer under high pressure. Yeah, why this thin wall? Here we are saying that arteries have thick wall, but why veins are thin wall? Thin wall इसलिए होता है कि जब blood veins में चला जाता है, arteries और कैपिलरीज को जो ज्वाइन करता है, आर्टरीज और वेन्स को जो ज्वाइन करता है, दीज आर कैपिलरीज. तो जब वेन्स में जाता है ब्लड तो वहां पे प्रेशर डाउन हो जाता है, ज्यादा प्रेशर होता ही नहीं है. दैट्स व्हाई उसका वॉल जो होता है वो थिन होता है. नाउ व्हाट आर कैपिलरीज? थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. कैपिलरीज जो है वो थिन वॉल्ड होता है, नैरो ट्यूब होता है जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से. नाउ मेन आर्टरी जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होता है उसको हम लोग एर्टा बोलते हैं. कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. Connected to the left ventricle of the heart. आर्टरी मेन जो आर्टरी होता है उसको एओर्टा कहते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से. Connected to the left ventricle of the heart, arteries generally carries. The main thing is arteries जो होता है वो left ventricle से connected होता है. Arteries left ventricle से connected होता है, right? That is aorta. The main thing I am talking about the aorta connected to the left ventricle. Or the main thing is arteries generally carry oxygenated blood. Arteries generally carries oxygenated blood except pulmonary artery, which carries the deoxygenated blood. Generally, arteries carries oxygenated blood except pulmonary artery, which carries the deoxygenated blood from left atrium to the lungs. So basically, generally, arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery, which carry blood from right ventricle to the lungs for oxygenation. And also, veins generally carries deoxygenated blood except the pulmonary vein. Okay, generally जो veins होते हैं वो deoxygenated blood को carry करते हैं except pulmonary vein. Pulmonary vein जो होता है वो lungs से right ventricle में oxygenated blood को लेकर के आता है. Pulmonary artery left atrium से lungs की तरफ लेकर के जाता है deoxygenated blood को for oxygenation, right? And pulmonary vein lungs से right ventricle में लेकर के आ रहा है oxygenated blood. So here's the main difference. Generally arteries carries oxygenated blood except pulmonary artery, and generally veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Pulmonary vein carries oxygenated blood from lungs back to the heart, that is left atrium. And arteries generally carry oxygenated blood except pulmonary artery connected to the right ventricle of the heart carries deoxygenated blood from right atrium to the lungs. Main vein. अब मेन वेन क्या, जैसे मेन आर्टरी और लार्जेस्ट आर्टरी इज aorta, main vein is vena cava connected to the right atrium of heart. Main vein is vena cava connected to the right atrium of heart. Further we will see the diagram. Diagrammatic view से ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा. What are capillaries? The exchange of materials like oxygen, food, carbon dioxide, etc. between blood and body cells takes place through capillaries. कैपिलरीज क्या होता है?
कि जितने भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन, फूड, CO2 etc. between blood and body cells takes place through capillaries. Now जितने भी कैपिलरीज होते क्या है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फूड, not waste material, I'm so sorry, exchange of materials like oxygen, food, CO2 etc. between blood and body cells. बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, जैसे फूड हो गया, ग्लूकोज हो गया, दैट इज ग्लूकोज, फूड मीन्स ग्लूकोज, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच में, ठीक है, जो भी फूड का एक्सचेंज हो रहा है वो कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है. जो भी फूड का एक्सचेंज हो रहा है इट इज थ्रू कैपिलरीज. ऑल्सो जैसे वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली कैरी करता है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन दैट्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू the heart, that is to the right ventricle of the heart. Now, and arteries generally carry oxygenated blood except the pulmonary artery, which carry deoxygenated blood from right ventricle to the lungs for oxygenation. Right. Now, what we can say about the capillaries? Generally, we are saying that arteries, veins, oxygenated and deoxygenated. It is grouply classified, which carry oxygenated and which carry deoxygenated. Now, capillaries. कैपिलरीज क्या करता है, किस टाइप का ब्लड कैरी करता है? कैरीज बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज ये एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजन को भी, CO2 को भी, ग्लूकोज दैट इज फूड एक्सेट्रा विद ब्लड एंड बॉडी सेल्स. तो अगर उसके पास ऑक्सीजन रहेगा तभी तो वो एक्सचेंज करेगा, उसके पास ऑक्सीजन रहेगा तब तो वो बॉडी सेल्स के साथ एक्सचेंज करेगा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कैपिलरीज कैरीज बोथ oxygenated and deoxygenated blood. Now come to the next point. Here we can explain about it. Now see the diagram, the complete diagram. ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है, right? Let me short out this. This is our heart, which has 4 chambers: right ventricle, right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. Okay, this is a complete view of our circulatory system. Pathways of circulatory system. We can say that. Pathways of circulatory system in human beings. Right. See, this is our heart. We marked it is 4 chambered. Heart is 4 chambered. Okay. We will later explain about the heart. Okay. The complete view. We can. I can show you. Right. Wait. From here we can. I can show you heart. Okay, let's suppose this is heart. Okay, ये heart है हमारा.
Okay, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, four chambered heart. ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है एंड हियर इट इज क्लासिफाइड एज राइट एट्रियम, ह्यूमन बींग्स, अच्छा ये छूट गया था. ओके, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ सी द कंप्लीट पाथवे. ओके, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. बॉडी ऑर्गन्स, लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी ऑर्गन्स. यहाँ से बॉडी ऑर्गन से जो ये जो वेन हमारा आ रहा है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? These are called वेना कावा, मेन वेन. जो बॉडी ऑर्गन से फिर यहाँ ऊपर जाने पे सुपीरियर वेना कावा आता है, बट जो नीचे साइड में होता है दैट इज नोन एज इंफीरियर वेना कावा. बट वी कैन कंप्लीटली से दैट मेन वेन दैट इज वेना कावा. ओके, सो बॉडी से हमारा कौन सा ब्लड जा रहा है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम में जा रहा है. बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में जो हमारा ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बॉडी ऑर्गन से जो राइट एट्रियम में ब्लड जा रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड बिकॉज इट हैज कार्बन डाइऑक्साइड. तो बॉडी ऑर्गन से ये राइट एट्रियम में जा रहा है थ्रू वेना कावा, मेन वेन, and it carries CO2. That's why it is known as deoxygenated blood. Also, come to the point. Right atrium से it will flows down to the right ventricle. यहाँ पे valves present होते हैं, cuspid valves. That is उसके थ्रू blood कहाँ से जा रहा है? Right atrium से right ventricle में. Now, from right ventricle it will flows to lungs for राइट वेंट्रिकल से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सबसे पहले बॉडी ऑर्गन से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में गया. देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ये गया एंड फ्रॉम देयर राइट वेंट्रिकल से इट विल गोज टू लंग्स बाय विच artery? That is pulmonary artery. I have already discussed about the pulmonary artery and pulmonary vein. That is, artery generally carries oxygenated blood except pulmonary artery, and here that pulmonary artery, and here is that pulmonary artery which carry deoxygenated blood from right ventricle to the lungs for oxygenation, for oxygenation. Now when it goes to lungs, जब ये lungs में चला गया तो lungs में what's present inside the lungs which is responsible for the oxygenation of blood? That is alveoli. Alveoli is the actual site of gaseous exchange. That is वहाँ पर alveoli, that is the actual site of gaseous exchange. When we are doing inhalation, we are saying that the partial pressure of oxygen in our body is less than that of the partial pressure outside our body. So there is a diffusion process going on through that, right? Then oxygen that comes inside our body, it will goes to the alveoli through the various pathways, respiratory pathways. Now alveoli are the actual site of gaseous exchange जो कि O2 और CO2 को exchange कर रहा है, जो कि O2 और CO2 को exchange कर रहा है. तो ये जो हमारा pulmonary artery है वो राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारा राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास ब्लड लेकर जा रहा है एंड वो जो वेसल्स है, ओके, उसमें जो CO2 होगा वो CO2 वो एल्वियोलाई को देगा और एल्वियोलाई से जो CO2 है वो ब्लड में आएगा, एल्वियोलाई से जो O2 है वो ब्लड में आएगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट एल्वियोलाइज आर द एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज. एल्वियोलाइज आर द एक्चुअल साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज. क्यों हम कह रहेंगे? हमारा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर कहाँ दे रहा है? लंग्स में. लंग्स में हमारा एल्वियोलाई प्रेजेंट है जो कि एक्चुअल साइट है गैसेस एक्सचेंज का, राइट? एक्चुअल साइट है गैसेस एक्सचेंज का. वहां पर
जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, वो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को देगा एंड एल्वियोलाई से जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो ब्लड में आएगा और जैसे ही वो ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलेगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा हार्ट में? सी pulmonary vein, that is generally veins carry deoxygenated blood except the pulmonary vein which carries the oxygenated blood। और वो कहां से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू pulmonary vein, and then it will goes down to the left ventricle। Now main artery that is aorta, ये कैरी करता है oxygenated blood, this carries oxygenated blood to the body organ। This is the complete circulatory pathway in human beings। How oxygenated and deoxygenated blood carry out in the whole body of a human being। कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट होता है हमारे बॉडी में? इट इज द कंप्लीट पाथवे ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो वी कैन स्टॉप दिस। Next topic will be discussed in the next class. Thank you so much.